वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 48 है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 1 है। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम BJS इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक, स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं, उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं। आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी जरूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ी कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता है। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम IPC में, अब IPC कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सेडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि CRPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, CPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, IPC BNS जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका CPC प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का यूट्यूब के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फख्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा जो ये इंटरव्यू का जो है, ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है। पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पे। तो ये एक समय है कि आपका 1-1 मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया, अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए, आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा।
हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए। और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाईकोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिसिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए तो अब आपको पता ही नहीं मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। इन वीडियोज को देखते हुए आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। हमारा इरादा सिर्फ इतना ही है कि इंटरव्यू तैयारी के लिए स्टूडेंट के पास एक कुछ ऐसा रेफरेंस मटेरियल हो जिससे वो अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। हमारे यहाँ थोड़ा अपोजिशन भी हुआ। लोगों ने कहा, फैकल्टी मेंबर्स और हमारी टीम ने, कि सर अगर ये सारे वीडियोज आप यूट्यूब पे डालेंगे तो कोचिंग के बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। अगर किसी को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाती है तो फिर कोचिंग के बिजनेस का क्या होगा? आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, आप आंसर भी बता रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों की परवाह नहीं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका सपना साकार हो, इसके लिए हम हमेशा वी आर ऑलवेज ड्यूटी बाउंड, वी आर ऑलवेज कमिटेड। और उसके अलावा भी अगर आपको हमारी किसी भी तरह की आवश्यकता महसूस होती है तो स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ, आप हम लोगों को कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अंत में यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन सलामत रहे। और अगर इनकेस आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी जानकारी में अगर कोई और अन्य कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट। चुकी है and we will start quantity। वीडियो चला गया।
सर पानी पी रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, पी लीजिए, आराम से पी लीजिए। हो गया सर। ओके, so we will start consti. What is यस सर। what is civil liberty? यस सर। What is civil liberty? सर लिबर्टी इज फ्रीडम एंड सिविल लिबर्टी वुड बी We have only civil liberty or we have also criminal liberty? क्रिमिनल लिबर्टी तो है। Criminal liberty है, criminal नहीं liberty. सर, नहीं 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 नहीं, सिविल लिबर्टी होगा सर वो। Yes. अगर क्रिमिनल लिबर्टी होगा तो फिर अरेस्ट वगैरह नहीं हो पाएगा। Oh, that is not liberty, that is immunity, and that is sovereign immunity. So, civil liberty is into the nature of freedom, very necessary for overall development of human being. A human being, because it is the finest creature of nature, यस सर। on account of being human being, there are certain freedoms which are very very necessary to make out human life meaningful, purposeful, living with dignity and all. There may be many civil liberties. Liberties basically flows from the Article 19. It places certain limitation upon the power of the state. The state cannot encroach upon those liberties like freedom of speech and expression. It can be the restrictions, not whatever the government want. The restriction has to be reasonable. If this restriction is not reasonable, whether a restriction imposed by the government is reasonable or not, court has to see this. So, 6 freedoms flowing from Constitution of India. Also, one has other liberty also. One Hindu may marry non-Hindu, like one Hindu may go to mosque, one Hindu may go to church, like this. So, apart from Article 19, civil liberty is a very, very wide term. And, yes sir. And these liberties are, uh, it can be exercised as long it is neither wrongful or unlawful. So, civil liberties, anything which is neither wrongful nor unlawful, anything which is neither wrongful nor unlawful, a man has liberty. Say, for example, it is liberty of a man either to marry or not to marry. Yes sir. So, it is liberty of a man either to be Ram Bhakt or Shiv Bhakt or Hanuman Bhakt, or to embrace Islam or embrace Christianity or like. So, these civil right and liberties, these are used interchangeably, and there is a basic difference between the two. Civil right, it puts fetter upon the power of the state. Right means 6 fundamental right. Note it down. Right to equality, right against exploitation, right to freedom of religion, right freedom
of religion, cultural, next, right to cultural and educational right, right to Reinforcement. right to constitutional remedies. Yes, sir. All these are considered civil rights. Apart from that, a man has also right Yes, to, sir. apart from that, the source of these rights are constitution, statutory provisions. Source of these rights, the basic source is the constitution, a statutory enactment, and judicial decisions. Any example of judicial decision conferring such right or liberty? श्रेया सहगल का केस क्या था? हाँ सर, 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया था। और जिंदल का केस क्या था? होल्डिंग नेशनल फ्लैग। हाँ, राइट टू होस्ट नेशनल फ्लैग। यस। सो यस सर, एक रिक्वेस्ट है कि सर आप एक बार ना उसको लीव करके ज्वाइन कीजिए सर, वो कनेक्शन बहुत ना डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, ठीक से हमको सुनाई नहीं दे रहा है। नाउ इज इट ओके? यस सर। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है। So, apart from the rights and freedoms provided by the Constitution, because ours is the secular character, Yes, sir. now there is no law prohibiting marriage between Hindu or Muslim, Hindu or Christian. So the one may withdraw his consent before the marriage. He cannot be held accountable for withdrawing those consent. So these are right of wide import. There is these are into the nature of human right. Now all human rights are not fundamental. A human right may be into the other form. A human right may be if a man desires to eat Rasagulla, he may eat Rasagulla. Nobody can prevent that. A man desires to eat ice cream because he is ultimately a human being. No one can. As long it is not either unlawful nor wrongful, one can enjoy, but certain rights are mentioned into the Constitution. These are known as fundamental rights, and for enforcement of those fundamental rights, one can directly move up to the Supreme Court. For other right, you may not directly move to the Supreme Court. You may take other legal action available under the law. So basically, civil right, it is this right is provided against the state, like right to equality. A man, Yes, a man has a right not to be discriminated. So far as civil liberties are concerned, there is a freedom of speech and expression. That is a type of liberty. Freedom to form, liberty to form association, liberty to assemble peaceably, liberty to move throughout territory of India, liberty to settle into any part of India, liberty to choose any trade, business, occupation, profession. So, difference between these rights and liberties, basically liberties flows from Article 19 and rights flows from the Constitution, from chapter 3rd of the Constitution. Now
Yes, sir. Falling has been considered as quintessence civil liberties. This Protection of Civil Right Act 1955, it penalizes untouchability. Yes, sir. So a man has a right not to be discriminated. Untouchability is a type of social discrimination. तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिबर्टी है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है. नाउ यू गॉट आइडिया अबाउट व्हाट इज सिविल राइट एंड व्हाट इज सिविल लिबर्टी. A man is a human being, and on account of human being, he has certain rights naturally available to him. There may be many मच्छर हमें ना काटे, मच्छरों से बचाव हो, महामारी बीमारी ना फैले, right to clean environment. मेरा मन कर रहा है कि मैं रात के 2 बजे खाना खाऊं. मेरे दिल में इच्छा है कि मैं रात के 2 बजे सड़कों पे घूमूं. I have liberty to move around, to roam around. So, but Constitution also gives right to travel throughout territory of India. What is Article 19(1)(d)? So right to move throughout the territory of India. Move. So timing has not been prescribed. No one can say that you cannot move around at night. So if you are moving into night, police may inquire you, is everything okay or like that, considering the safety. Those things are, but if you move at 2 o'clock during night, you are not committing any act which is either unlawful or wrongful. There can be no punishment awarded and you cannot be prevented. So these civil rights and liberties, these are recognized and provided either by constitution or a statutory enactment or by judicial decisions. Human right is a very, very wide concept. Every human right is not the fundamental right. But all fundamental right, all civil right, all civil liberties are human right. Human right is the genus and these rights are the species. क्या ऐसा कहा जा? I do not know. मैंने just guess किया. Really, मैं नहीं जानता. You have to apply your mind and think reasonably whether I am correctly telling or not telling. Yes, sir, we can say so. तुम्हारा ऑप्शनल क्या था? Sir, constitutional था. Constitution, administrative law, transfer of property और commercial law. तब तो कॉन्स्टी में तो फिर तगड़े क्वेश्चन बनते हैं, फिर टेढ़े मेढ़े और बहुत तगड़े क्वेश्चन. ठीक है. पहले बेसिक कर लेंगे, उसके बाद वो सब क्वेश्चन करेंगे. सो
now it's not that civil right, now civil means anything which is not criminal. If I have 100 rupee, I can expense as in the manner I wish. I can dispose of my property to a Muslim, or I can dispose of my property to a beggar. I can gift my property to anyone whom I like. Right and liberty, both are interchangeable. But literally speaking, right means you are protected against the action of the state, and liberty means you have a choice either to do it or not to do it. So with this backdrop of questioning, ये तो एक लिमिटेड टीचिंग हो गया. अब इस पे क्वेश्चन, व्हाट इज सिविल राइट एंड लिबर्टी? The civil rights would be those rights for which protection is available against the action of the state. Yes, very correct. Our constitution also provides for certain rights. Certain civil rights. Certain civil rights, like right to equality, right against exploitation, right to freedom of religion, next right to Cultural and fundamental. Yes, cultural and educational right. Right. On the other hand, sir, civil liberties confer a choice upon a person to either do or not to do. And examples of civil liberties can be found in Article 19 of the Constitution. So the sources of these rights and liberties are not only the Constitution, other enactment, other statutes. So And judicial decisions as well. and judicial decisions. Now, nowhere it is written that a Hindu can marry Muslim or Christian. Yes, This sir. is one aspect. Nowhere it is also prevented that Hindu can't marry Christian or Muslim. So, a thing, unless prohibited by law, or a thing unless specifically prohibited by law, like a Hindu can only adopt Hindu. Yes, sir. A Hindu cannot adopt a Muslim child or Christian child. So there is no such liberty. So sources of these rights and liberties are constitution, statutory enactments, judicial decisions. All are a species of human rights, which is quintessential for a human being. It makes the human life meaningful, purposeful, with dignity. It is very much necessary for the overall development of human being. I have a right that I may refuse to go to any social gathering. No one can force me. I have a right to keep silence. I have a right not to talk to anyone. So I have a right of my own privacy. So these rights and liberties, sometimes it is used for one another. But the basic difference is, for a right a man is entitled to and legally protected. For the liberty, it depends upon choice and wishes of the man.
ठीक, इतना पे चल जाएगा काम. Yes, sir. Have the basic idea about just You are right. मुझे प्यास लगा हुआ. रेस्टोरेंट में Yes. खाना खा के आने के बाद प्यास खूब लगता. पता ना क्या बनाते हैं वो. जैसे एक गिलास पानी. मेरे साथ भी होता है. हाँ मेरे साथ भी होता है. हाँ, खूब लगता प्यास. एक गिलास पानी पी के आ रहा हूँ. Yes, sir. What is constitutionalism? The constitutionalism is upholding the spirit of the constitution. पहले वाला वीडियो देखा था क्या? Yes, sir. क्लासेस में आपने डिस्कस किया है ना, तो उसमें हाँ. सर नोट्स बना वगैरह लिखा हुआ है. What are essential features of federalism? Sir, not generally there are 5 features of federalism, and these are first being supremacy of the constitution, a written constitution, distribution of powers between legislature, executive, and judiciary, authority of the court, and And rigidity of the constitution. वो तो कहा है rigidity of the constitution. Duality of government कहा. नहीं, गवर्नमेंट नहीं का. Dual government. अब नाउ ये सारे पोर्शंस हम लोगों ने शुरुआती वीडियो के पार्ट में काफ़ी डिटेल में कहा हुआ है. ये किसने फेडरलिज्म इज ए कंसेप्ट विच यूनाइट सेपरेट स्टेट्स इनटू यूनियन विदाउट सैक्रिफाइंग देयर ऑन फंडामेंटल पॉलिटिकल इंटीग्रिटी. हुज स्टेटमेंट? डाइसर. इसको नोट कर लो. Yes, sir. Federalism is a concept which unites separate states Yes, sir. into a union without sacrificing their fundamental political integrity. Yes, sir.
So, what is classical view of federalism? या ऐसा ये सब पॉलिटिकल साइंस में ये सब इंटरव्यू के लिए इसको छोड़ देते हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं और मेंस पर्पस से डेट में भी, लेकिन अब इस एंगल पे नहीं पूछा जाएगा। मैक्सिमम ये पूछा गया कि इसेंशियल्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है, तो 5 इसेंशियल है वो बोलना, जितना जरूरत है उतना ही हम लोग करेंगे। अब ये सब क्लासिकल व्यू, प्रोफेसर हुयर का क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन? So unitary constitution is that where there is a one form, where there is only Power, one government. yes, power of the government is centralized into only one government, that is the center. बहुत सारे इसमें और ये हो जाएगा कि नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और क्वासी फेडरल। हाँ सर, ये आपने पूछा था एक बार ना कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, तो उसका वो सारा कराया हुआ है शुरुआती वीडियोस में, तो इसको हम लोग ज़्यादा नहीं खींचेंगे। नाउ ये तो हर कोई जानता है कि प्रीएम्बल इज नाउ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइव जो ऐसे शुरू होता है कॉन्स्टी में कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ओनली सिटीजन और also available to non-citizen. So fundamental rights are generally available to citizens, but there are certain fundamental rights which are available to non-citizens as well. For example? Sir, Article 14 हो गया, Article 21 हो गया, 20? ये 20 भी है, 22 भी है। Yes. पर्सनल वर्ड यूज किया हुआ है। Yes, yes. So, right to move Supreme Court for the enforcement of the fundamental right itself is a fundamental right. How? Yes. How this is? Because fundamental enforcement machinery, enforcement mechanism है, और अगर फंडामेंटल राइट्स को अगर बिना enforcement mechanism के तो वैल्यू नहीं होगा उसका। ये आंसर देंगे। क्या क्वेश्चन पूछा गया? Is a right to move to the Supreme Court in case of infringement for enforcement of fundamental rights is in itself a constitutional fundamental right. How? तो इसका क्या जवाब देंगे? आर्टिकल 32(1) को 32(1) पढ़ी है। The right to enforcement. The right to move to the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed. तो इसमें तो कहाँ लिखा हुआ है कि राइट टू मूव इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल राइट? इसमें तो 32(1) में कुछ और लिखा हुआ। हो गया ना कंफ्यूज? पूरा कंफ्यूज होगा। How if right to move Supreme Court is guaranteed? What is the meaning of a guaranteed right? The right to move Supreme Court for enforcement of fundamental right is guaranteed. What does it mean? Sir, 1 मिनट का पाकट हो गया, हम थर्ड प्लेस चेंज करके बैठते हैं। सर बस आपको 2 मिनट दीजिए। ठीक।
अगर मैं कहूँ कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल राइट, तो ऐसा तो कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये कैसे मानेंगे कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल राइट? ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो इसमें सर वर्ड, हाँ हाँ बोलो बोलो। गारंटीड वर्ड यूज किया हुआ है ना सर? यस, गारंटीड मीन्स इसी वर्ड उसको तो बताइए। तो सर ये जो गारंटीड वर्ड यूज किया गया है, तो इसी को तो वो राइट बना दे रहा है कि Yes, फंडामेंटल राइट बना दे रहा है। by using the word guaranteed, it is something, it emphasizes and it strongly suggests that this right cannot be taken over. So right to Yes, sir. move Supreme Court straightway directly for the enforcement of fundamental right itself is a fundamental right. ऐसा बहुत सारे केसेस में हेल्ड किया गया। पूछा ये जाता है कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए या कैन यू स्ट्रेट वे गो टू द, ऐसे मतलब इस भूमिका में पूछता है। अब राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट इज गारंटीड, हाँ तो तो पूछा जाएगा कि ऑफ कोर्स यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट बट व्हाई नॉट, व्हाई यू डू नॉट गो टू द हाई कोर्ट? इसका क्या जवाब होगा? सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट you can straightway go to the Supreme Court under 32(1), right? So Yes, sir. if everybody is approaching Supreme Court, Supreme Court is flooded. By approaching the High Court, a man have two options, one at the High Court level and another at the Supreme Court level. One under Article 226, another under Article 32. So, though it is a guaranteed right, itself is a fundamental right, but the best advisable courts, let the apex court be not busy with the petitions which could be disposed of much conveniently at High Court level. Article 32(1) is the heart and soul of the Constitution. किसने ये कहा? सर अंबेडकर ने कहा हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस, 32(1) के बारे में कहा। अब नाउ it is not only right of the individual to move Supreme Court. Supreme Court is also under obligation to enforce the fundamental right. क्या ऐसा भी कह सकते हैं? A legal duty is casted upon Supreme Court to enforce the fundamental right. सुप्रीम कोर्ट पे इस तरह की कोई ड्यूटी है या नहीं है? बिकॉज दिस राइट इज ए गारंटीड राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज कस्टोडियन भी है एंड दैट राइट इज ए गारंटीड राइट, सो देयरफॉर इट बिकम्स द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट to enforce the fundamental right of the individuals.
ऐसा बहुत सारे केस में कहा गया था। और ड्यू टू दिस रीजन, बिकॉज ऑफ द वर्ड गारंटेड, सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्या ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग? हाँ सर, ये गारंटीड वर्ड उसको वही कन्फर्म कर रहा है। अ, अगर कोई लॉ सुप्रीम कोर्ट का पावर अंडर 32(1) टेक अवे करता है, ले लेता है, तो लॉ क्या होगा? सर वो वर्ड होगा। यस। तो इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन कमिंग टू नो एनी ब्रीच ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल ग्रांट रिलीफ टू द इंडिविजुअल? हाँ, हाँ बिल्कुल होगा। तो ऑब्लिगेशन यस, हाँ। imposes a duty. Can Supreme Court refuse petition under 32(1) merely because the petitioner has not approached the High Court first? No. It cannot be refused by the Supreme Court. Can petition under 32(1) be dismissed because alternate remedy is available to the petitioner? होता है सर। 32 ऑल्टरनेट रेमेडी जब कर मैंडेमस वगैरह के रिट्स की बात करें, अगर अल्टरनेट रिमेडी अवेलेबल है पिटिशनर के पास, देयर इज ए केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द पिटिशनर, कैन सुप्रीम कोर्ट से दैट नो यू हैव आल्सो अल्टरनेटिव रिमेडी, गो टू द हाई कोर्ट? फंडामेंटल राइट्स की जब बात करेंगे तो वो रिफ्यूज नहीं कर सकते। अब हम लोग इसमें so अब क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डू अंडर आर्टिकल 32? सर्टियोररी अंडर आर्टिकल 32 हाई कोर्ट के खिलाफ इशू हो सकता है। हाई कोर्ट के खिलाफ हो सकता है सर। सुपीरियर कोर्ट से वो सर्टियरी ऑर्डर करते हैं सुपीरियर कोर्ट का सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए। तो बट अंडर 32 कैन सर्टियोररी बी इशूड अगेंस्ट हाई कोर्ट? नो सर। हाँ, इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट हाई कोर्ट। केस का नाम लिख लो, नरेश श्रीधर मिराजकर, नरेश श्रीधर मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। Can Supreme Court allow damages for the breach of fundamental right? Yes sir. Damages are allowed only into the suit. Supreme Court may grant compensation. Damages compensation तो हम लोग synonymous ही पढ़ते हैं almost. Damages are awarded into the suit. Damages are awarded in the suit. ये literal लिख लो इसको, note it down. यही सोच के हम yes बोले। यही सोच के हम yes, टॉट में हम लोग पढ़ते हैं compensation damages एक ही जैसा है। ये देखो हमारे पास डीडी वसु है, दिख रहा? इधर जेनिंग्स रखा हुआ, उधर वेयर रखा हुआ। आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, पढ़ूं या ना पढ़ूं खरीद जरूर लेता हूँ। तो अब तो खैर ऐसा आए। डैमेजेज आर अलाउड, ये पूछा गया क्वेश्चन है
कि what is difference between damages and compensation. Damages are allowed into the suit and compensation may be allowed into the writ petition. Damages may not be allowed under the writ. Both connote the same meaning. हम लोग सूट फॉर डैमेजेस पढ़ते हैं या सूट फॉर कंपेंसेशन भी पढ़ा है? सूट फॉर डैमेजेस पढ़ते हैं सर। हाँ, तो ऐसे पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट अलाउ डैमेजेस बट इट कैन अलाउ कंपेंसेशन। ये कैन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एक्सरसाइज अपीलेट पावर? अपीलेट पावर नहीं सर। हाँ, इट कैन नॉट एक्सरसाइज में आता है। हाँ हाँ। और हु में अप्लाई अंडर आर्टिकल 32? क्या नॉन सिटीजन को राइट है आर्टिकल 32 का? नहीं सर। पढ़ो। अगर आर्टिकल 14 का वायोलेशन हुआ है तो कर ही सकता है। देखो, चेक करो पहला। अब तुम्हारा कॉन्स्टी सब्जेक्ट रहा तो मैं थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन तो पूछूंगा। एक सेकंड। उसमें तो सर कोई वर्ड नहीं यूज किया गया, पर्सन या सिटीजन। तो व्हाई नॉट नॉन सिटीजन कैन आल्सो गो अंडर आर्टिकल 32 व्हेन द राइट इज अवेलेबल है उसको नॉन सिटीजन्स को, तब तो उसके लिए जा ही सकता है। बिल्कुल जा सकता है। और द मोस्ट ग्लेरिंग एग्जांपल आर्टिकल 21। हाँ बिल्कुल 32 में जा सकता। तो ये थोड़ा ट्रिक वाला क्वेश्चन बेसिक कर दिया ना, तो वो सीधे 32 नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे कि क्या नॉन सिटीजन 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि नहीं। तो जो केयरफुली नहीं सुनेगा तो कह देगा कि नहीं जा सकता, आंसर बिकम रॉन्ग। तो फिर अगर कोई कहता है कि नहीं जा सकता तो कहाँ लिखा हुआ है ये, तो फिर मतलब कुछ इस तरह के। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी से ही होगा, मतलब ऐसा इंस्टांसेज आर देयर कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबियस कॉर्पस? सर habeas corpus means to have the body. Yes. The person, the detaining person will produce the person so detained before the court and justify his detention. To give reasons for his detention. ये हैबियस कॉर्पस ये सेलिब्रेटेड रिट है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रिट है। एंड इट इज नॉन एज ए ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज। लिख लो, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज नॉन एज ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज। It is also known as the first security of civil liberty. Yes sir. पुलिस ने किसी को कोई केस दर्ज होता है 420 का और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। द मैन इज इन जेल। वेदर रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन बी फाइल्ड और नॉट? सर अरेस्ट में रिट नहीं फाइल होता है, डिटेंशन के केस में रिट होता है।
डिटेंशन के केस में अरेस्ट इंक्लूड्स डिटेंशन और नॉट? It includes detention, sir. So say a man has been detained. Can writ of habeas corpus be filed? So if detention is illegal, then only the writ can be filed. Yes. If the detention is illegal, then so habeas corpus is maintainable against illegal detention. If the police has rightfully arrested or detained a man, then habeas corpus is not maintainable. It gives prompt and a speedy, effective remedy to the detainee. और ये अब ये अगर टॉर्चर हो किसी प्रिजनर का जेल में या इल ट्रीटमेंट हो, उसके बेसिक राइट्स को वायलेट किया जा रहा, तो क्या हैबियस कॉर्पस का पिटीशन लग सकता है या नहीं लग सकता? लग सकता था उनके केस में. What is the requirement of mandamus? So mandamus में सबसे पहला होना चाहिए कि पब्लिक ड्यूटी होना चाहिए, पब्लिक ड्यूटी. दूसरा होना चाहिए सर लीगल राइट. तीसरा उसका एलिमेंट है ये रिट ऑफ मैंडेमस किसके खिलाफ इशू होता? एनी पर्सन हु इज इन पब्लिक ऑफिस, इसकी पब्लिक ड्यूटी होती है. इट इज मैंडेमस क्या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ इशू हो सकता है या नहीं हो सकता? सर जनरली तो नहीं होता है. हाँ, ये mandamus is issued against administrative or statutory public authority or against the government when it violates fundamental right, either Article 14, 19 or other fundamental right. Unless the fundamental, ये writ तभी इशू होंगे जब fundamental rights are violated. Can mandamus be issued against legislature to make a law? No. Can mandamus be issued against High Court? No. It is issued against public authority, a statutory public authority or administrative authority if the action of administrative authority or statutory public authority violates fundamental right. So for applicability of mandamus, there has to be a duty imposed upon such authority. There has been breach of that duty, and as a consequence of the breach of that duty, fundamental right of the petitioner has been affected or has been violated. Then mandamus can be issued. और मैंडेमस के साथ सुटेबल डायरेक्शन भी इशू किया जा सकता. और उसके बाद अब नाउ प्रोहिबिशन क्या है? So prohibition is a judicial order that is issued by a superior court to a subordinate court to prevent the continuation of proceedings taking place in excess of either jurisdiction or in violation of principle of natural justice. और ये this writ of prohibition is to be issued in rare cases. It's not on every now and then. What is difference between prohibition and certiorari? सब पहला तो ये कि प्रोहिबिशन प्रिवेंटिव नेचर का, सर्शियरी करेक्टिव नेचर का होता है. Yes. प्रोहिबिशन इश्यू होता है कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तब, और सर्शियरी होती है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग. और प्रोहिबिशन होता है
कि याद नहीं आ रहा, एक और डिफरेंस Prohibition is available at earlier stage, certiorari is available at later stage. If the authority has passed some order not in conformity with law, it can be quashed under certiorari. Not prohibition में matter must be, हाँ quashing वाला। को वारंटो तो हर कोई जानता ही जानता है, को वारंटो में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। What is difference between equality before law and equal protection of law? The equality before law is of English origin and equality before law is of American. It is similar to the 14th Amendment of the US Constitution. Equality before law is a negative concept and equal protection before law is a positive concept. And equality before law means that equal subjection of all classes to the ordinary laws of man. And equality before law means that all persons similarly circumstanced should be treated alike in privileges conferred and liabilities imposed. How equality before law is a negative concept? So equality before law is a negative concept in the sense that it implies absence or negation of privileges in favor of individuals. पहले वाला सारा वीडियो देख के नोट किया हुआ है, नहीं ये हमारी लाइन है, निगेशन ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। तो आंसर से ही मैं समझ गया कि यू हैव डन योर होमवर्क वेरी वेल। व्हाट इज न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी? The new concept of equality as judicially evolved in EP Roypa case means that equality is antithesis to arbitrariness. Yes, ठीक है मैं समझ गया, you know this. What is rule of law? So rule of law means that no person shall be subject to harsh and discriminatory treatment. The concept was further explained by Dicey in his book, and according to him, rule of law includes supremacy of law, equality before law, and a judge-made constitution. Rule of law symbolizes supremacy of the law. It's not the rule of the ruler, but rule of the law. So this is the basic rule of governance of any civilized society. Any civilized, basic rule of governance into any civilized country. What is concept of equality? Equality means equality before law and equal protection of laws, as embodied in Article 14. What is difference between formal equality and egalitarian equality? लिखो formal equality and egalitarian equality. Yes, sir. Formal equality means the law treats everyone equal. Formal equality means that law treats everyone equal and does not favor anyone. Yes, sir. Either because he belongs to the advantaged or disadvantaged section of the society. Yes, sir. Formal equality is a misnomer and misconception rather. And Yes, that is rarely possible. अब इसको थोड़ा समझ लो
nature has not created two human beings as equal. हर का रंग रूप स्वभाव चेहरा मोहरा आवाज फिंगरप्रिंट डीएनए अलग है. तो there is no absolute equality. If we apply absolute equality, that means everybody is to be treated equal. अब लाइक जैसे मान लो कि कोई सीनियर है या कोई एजेड पर्सन है, तो एक एजेड पर्सन को भी he needs a comfort, he needs a chair. जो यंगर है उनको चेयर ना भी मिले तो चलेगा. तो उसमें चूंकि एल्डर्स को मिला तो सिंगल को प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इज मूविंग ऑन द, उनका कन्वो जा रहा, रोड ब्लॉक नहीं होगी. हम भी जाएंगे तो वैसे ही जाएंगे. तो एब्सोल्यूट. अब नाउ the real idea is there is a gap between the society, between the rich and the poor. If we are treating rich and poor alike, so this gap would further extend. The idea is to minimize this gap. So equality is not of universal application. Formal equality is totally a misconception, and that is never possible. Nature has not created two human beings as equal. So to minimize the gap, to bring equality, we have unequal treatment, and therefore equality amongst equal, alike should be treated alike, similarly situated should be treated similarly. And that has to be based upon intelligible differentia, and there has to be a classification which has to be reasonable, and there has to be a nexus on the object of the classification and purpose which is to be achieved. So since absolute equality is not possible practically, number two, this absolute equality also signifies negation of any special privilege. Therefore, it is a negative concept also. So far as equal protection of laws, a prime minister committing murder and a criminal committing murder, all shall be subject to the equal protection of law. Law treat them equally. So equal protection of law is a more positive concept. तो इस पे इतना ही पूछा जाता है कि हाउ डेट इज निगेटिव कंसेप्ट एंड हाउ डेट इज मोर पॉजिटिव कंसेप्ट. तो अब इगलिटेरियन इक्वालिटी का लिख लो. इट इज प्रोपोर्शनल इक्वालिटी. Yes, sir. It is proportional equality, and it expects the state to take affirmative action in favor of disadvantaged sections of the society Yes, sir. within the framework of liberal democracy. Yes, sir. Proportional equality is the equality in fact. Whereas formal equality is the equality into the law. एक लाइन और लिखवाएंगे. प्रोपोर्शनल इक्वलिटी advocates protective discrimination
Yes, sir. अच्छा, बेसिक फीचर को डिफाइन किया गया या नहीं डिफाइन किया गया है? नहीं किया गया है, sir. हाँ, only This is the basic feature has been laid down. हाँ, whether equality is the basic feature of the constitution or not. Yes, sir. और डेमोक्रेसी का यही वसूल है, राजा प्रजा सब एक समान, इक्वालिटी. So equality is the basic feature of अगर पूछा जाए कि व्हाट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज तो क्या कहोगे? The equal protection of laws means all people who are similarly situated are to be treated alike. लिखो इसको, अच्छा आंसर लिखवा देते हैं. Amongst the equals, amongst the equal, the law should be equal. Equal protection of the laws means right to equal treatment in similar circumstances ये ईपी रुपया वाला हो ही गया. आर्बिट्रेरीनेस इज एंटीथेसिस ऑफ इक्वालिटी. Yes, sir. ये मॉडर्न कंसेप्ट है. और ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का पार्ट है या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का पार्ट है? Equality before law. Anything? Law has to be equal amongst equals. Law has to be equal amongst equal. ये क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ है या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज? अभी डिक्टेशन दिया है. Equal protection of laws है, sir. हाँ, तो इक्वालिटी अमॉन्ग्स इक्वल, ये इगलिटेरियन इक्वालिटी है. तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन कंसर्न्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज या इट आल्सो कंसर्न्स इक्वालिटी बिफोर लॉ? Equal protection of laws. इक्वलिटी बिफोर लॉ में कोई क्लासिफिकेशन होगा, वो तो आंख बंद करके ऑल आर इक्वल, एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करता है. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब हम लोग थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं. पूछना किसी से कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन किसका है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का है, या यहाँ पे स्टूडेंट फंसते हैं. क्योंकि ये सारी चीजें जितना मर्जी पढ़ो, अगर इनको आराम से नहीं करोगे तो जितना मर्जी पढ़ लो, वो वैसे बोल दो, ऐसे लिख दो, लेकिन ये मतलब समझ में नहीं आता. सब लगता है कि सब तो एक ही जैसा है. केवल अब नाउ दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन. देखो ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज द एब्सोल्यूट इक्वालिटी. उसमें कोई क्लासिफिकेशन होगा? इक्वालिटी, हाँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ में तो क्लासिफिकेशन इट डज नॉट परमिट, इट सिग्निफाइज negation of any special privilege. तो when there is negation of privilege तो कहाँ से क्लासिफिकेशन उसमें आएगा? there is no classification, everyone is equal. तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी टाइप का, घुमा हुआ नहीं, लेकिन जानना चाहिए. अब पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, वी डू नॉट नो दैट. ये कोई घुमा के पूछोगा तो बता तो पाएंगे. अब चाहे जितना मर्जी घुमा लें इस पर,
माई जॉब इज कि जो टॉपिक में टच और कवर कर रहा हूँ उसमें चाहे इंटरव्यू बोर्ड में जितना मर्जी घुमा लें, चाहे जितना मर्जी ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ ला, हमारे किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू नहीं होगा। द मेजर डिफिकल्टी इज कि हम लोग क्या करते हैं, या लॉस को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ किसी को, यह मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है। अब देखो ना, कौन सी हॉट फेवरेट हर किसी का है। अगर दो तीन बुनियादी सवाल पूछ दिए जाए, इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, तो रटा रटाया के अलावा कुछ नहीं निकलता। और रटा रटाया में और उसी का ये अंजाम है कि देखो, अगर एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाए कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन किसका पार्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, किसी भी किताब में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ, चाहे दिस एक्सप्लेनेशन इज नाइदर गिवन, किसी भी किताब में नहीं दिया हुआ। दिस इज हाँ, तो दिस इज जस्ट, आप देखो अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ से जाते हो तो कोई क्लासिफिकेशन परमिट ही नहीं करेगा, वो तो एवरीबडी इज इक्वल, सो देर इज नो पॉसिबिलिटी, इट कैन नॉट अलाउ एनी क्लासिफिकेशन। वहां तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात हो रही है। तो दिस क्लासिफिकेशन इज परमिसिबल अंडर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जानते हैं हर कोई यहाँ इंटेलिजिबल डिफरेंस या 5-10 केस हर किसी को याद है। पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन याद है। ये क्लासिफिकेशन मैथमेटिकल नाइसिटी पे नहीं होना चाहिए, पर्पस पे हो, बाकी सारी चीजें जानते हैं, एवरी स्टूडेंट नोज डेट। लेकिन वही घुमा के पूछ दिया जाए तो वहीं पे दिक्कत हो जाती है। और अगर ये आप समझ गए इसको, तो इसमें से फिर अब आपको नहीं कोई घुमा सकता इसमें। अरे आज बड़ा लंबा चल गया, हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं। 11:30 थोड़ा कितना बजे, 10:30, 10:30, तो 1 घंटा तो हो ही गया। रेस्टोरेंट में खाओ के आए, हम भी अब थक रहा है। एक सेशन हो गया मॉर्निंग में 7 o'clock, नेक्स्ट सेशन। वो बता दीजिए ना। अच्छा, डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाला जो पूछ रहा था मॉर्निंग में, वो मैं भूल गया। ये जो क्वेश्चन जहां से भी आया है, एविडेंस एक्ट टॉक्स अबाउट एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल रिकॉर्ड, इट डज नॉट क्लैरिफाई into the IT Act and into the computer science. Electronic record which is stored in a computer, that is pure form of the data. Digital record, say I am giving you a study material, a soft copy. I have converted it from hard copy into by scanning. You have written mains answer. You have written upon the hard paper, you have made PDF and sent to me. That is the digital record. So electronic record is basically stored in a computer. By use of the application, it can be viewed or shared. Digital record is meant for the sharing purpose. Digital signature, like, so both अब now यह क्वेश्चन की व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल रिकॉर्ड, ये कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है, जीके का। लॉ डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन आइदर ऑफ द टू एंड देयर इज प्रिजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल रिकॉर्ड अंडर द न्यू एविडेंस एक्ट। और वो मुझे नया वाला मुझे भी याद नहीं हुआ, मुझे भी निकाल के देखना पड़ेगा। आप चेक करके बताना, जहाँ प्रिजम्पशन शुरू होता है ना, है यहीं पे, मैं देख के बता रहा हूँ कि प्रिजम्पशन क्या, नोट भी कर लेना। प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर 86।
presumption as to electronic agreement, ये 85 में है। Yes, sir. और प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट 87 में है। और प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस Yes, sir. ये 90 में है। अब there is electronic message and there is a digital message. So it is more into the nature of computer science. Into computer science, we may have difference. Law, into the eyes of law, both are admissible under Bharatiya Sakshi Adhiniyam. And there is presumption of its being genuine. जो प्रोसीजर है, हम लोग इस पे इलेक्ट्रॉनिक वाले पे आई होप एंड बिलीव कि चूंकि ये सब आया है तो एक और स्पेशल सेशन कट लेंगे। मतलब हम लोगों का, तुम्हारा कब है इंटरव्यू? 16th को। तो ठीक है, टाइम है। आई होप एंड बिलीव कि 3-4 तारीख तक सारे सब्जेक्ट खत्म कर दें। हम लोगों के पास एडवांस में थोड़ा टाइम होगा तो जो चीज़ें, आई एम ऑल्सो प्लानिंग की पॉक्सो एक्ट के भी थोड़ा करा दें, PMLA भी करा दें, UAPA भी करा दें, जो बाकी PC एक्ट भी थोड़ा करा दें। अगर टाइम बचता है तो भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट को बड़ा पसंद आ रहा है। और ठीक है, अब एक बार बन गया सब्जेक्ट वाइज मॉक, आगे से स्टूडेंट को कहेंगे सारे वीडियो देख के आ जाओ, उस पर मॉक करेंगे आगे के लिए। तो अब इस बार अब देख रहे हो एक दिन में 4-4 वीडियो जा रही हैं। आज अभी जैसे ही क्लास खत्म होगा 4था वीडियो एडिट हो गया, अब वो आएगा। तो ठीक है, इट्स नाउ लेट। एक क्वेश्चन सर बता दीजिए, फास्ट ही सही है। सर जुडिशियल रिव्यू में हम लोग पढ़ते हैं, बुक्स में लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का एक्शंस का होता है, जुडिशरी का हो सकता है सर? Judiciary is not judiciary if it's discharging judicial function. Not a state. Not a state, but if it's discharging administrative function, it become a state. And if the action of the judiciary is on administrative side, there can be simple सा question है, can a writ be filed against high court or not? तो जुडिशियल फंक्शंस पे तो नहीं होगा, लेकिन जब नॉन जुडिशियल, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है तो हो सकता है। जैसे हाई कोर्ट की कोई रिक्रूटमेंट निकले, हाँ, तो वो कर सकता है। हाँ, तो दैट इज डिस्चार्जिंग ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, नॉन जुडिशियल फंक्शन, तो कर सकता है। तो जुडिशियल से पूछा गया था ये एक सवाल, हाँ, तो पता नहीं जुडिशियल रिव्यू को पता नहीं आर्टिकल 136 से कनेक्ट किया गया, कैसे समझ में नहीं आ रहा है। किसने कनेक्ट किया 136 से? वो जो बैठे हुए सर पैनल में, हमारे कॉलेज के भी प्रोफेसर थे, तो जुडिशियल रिव्यू अगेंस्ट नहीं, वो दूसरी 136 is the special leave petition. Into the Supreme Court, you can challenge the decision of any authority, tribunal, anyone. You can take that to the Supreme Court. If a writ has been issued against the High Court on administrative side, against that decision of the High Court, you can also direct way go to the Supreme Court. इस सेंस में वो कनेक्ट कर रहे होंगे। अब हाउ दे वर कनेक्टिंग इन व्हाट सेंस, हो सकता है कि बीच में कुछ मिस कर गए हो, उनका वो जो कनेक्ट करना वो सही था और सही तरीके से उन्होंने रीड आउट 136 रीड आउट। ये आदत मेरा ठीक है, कुछ भी होता है तो रीड आउट।
Yes, sir. ये चूंकि आई हैव बीन ए प्रैक्टिशनर ना, तो रिफ्लेक्ट होता है. Notwithstanding anything contained in this chapter, the Supreme Court may, in its discretion, grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence, or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India. तो ये 136 का स्कोप कलेक्टर ने कोई ऑर्डर पास किया, कैन यू चैलेंज दैट ऑर्डर अंडर 136 और नॉट? नहीं सर, कलेक्टर कोर्ट नहीं है, ना ही ट्रिब्यूनल है. कलेक्टर ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया एंड नो अपील हैज बीन प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट ऑर्डर, यू हैव टू रेमेडी. अब नाउ क्वेश्चन इज a special leave petition, under what circumstances it can be filed? What are the essentials? It's not that on every now and then you can go into the SLPs. No sir. It is the essential of SLP. Literally it is maintainable against the order of any tribunal court. एक बार फिर से पढ़ो इसको carefully. Made by any court or tribunal in the territory of India. लिखा हुआ? Yes sir. तो अब now if there is no hope and a scope of any further review of that order, and that order causes some harm to the petitioner or his resulting into serious violation of his right, there are many executive orders against which no appeal or no remedy has been provided. Power of the High Court also, in some cases there is no power to the High Court also. You shall have to straightway go to the Supreme Court under Article 136. इसको हम लोग कॉन्स्टी कर ही रहे हैं. प्रोफेसर ने जो कहा वो ठीक कहा है उन्होंने.